Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Rupam. I am Rupam. Before discussing today's topic, I request you to subscribe my channel and press bell icon to get notifications for new videos. Today's our topic is where do we place comma? In large number, commas are used to help the reader. We know that there are 3 digits in number at 100 place and there are 4 digits present in thousands place. So look at place value chart. We know that in place value chart we move from right to left. Starting from right, the 9 places that is ones, tens, hundred, thousands, 10,000s, lakhs, 10 lakhs, crore, 10 crore. These are the places. So these 9 places are grouped into 4 periods. So these are the periods. Ones period, thousands, lakhs and crore periods. So these 9 places are grouped into 4 periods. Okay. And each period is separated by comma. Covered ones, tens and 100 places where digit is present, and thousands and 10,000s. These are the 2 places where digit is present, is covered by thousands period. Lakhs and 10 lakhs, these are also a place where digit is present, is covered by lakhs period, and crores period cover crores and 10 crores. Okay, so look at this bigger number 21,020. So ones period cover 20 and thousands period cover 21,000s. Okay, so ones period cover ones, tens and 100, and thousands period covered thousands and 10,000s. So after thousands period end and ones period begin, we use comma. Here thousands period end and ones period begin, so use comma. Okay, point to remember: a place that has 0 in the standard form of a number is not represented in its word form. Okay, so what is the word form or standard form? कोई भी नंबर हम 72 ले लिए. ओके, तो ये 72 का 2 फॉर्म होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और एक वर्ड फॉर्म होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जब हम नंबर को डिजिट में लिखेंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, और जब यही नंबर को जब हम स्पेलिंग में लिखेंगे तो वो वर्ड फॉर्म होगा. जैसे 72 लिखना है तो हम क्या करेंगे? 72. These are the standard word form, और 72 जो है वो standard form है. So first point is look at this number 702. 702. A place that has 0 in the standard form of a number is not represented in its word form. अब 702 में ये टेंस के पोजीशन पे, टेंस के प्लेस पे ये 0 है, तो जब हम इसको वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो सिर्फ हम इसको 702 लिखें. हम अभी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि टेंस में जो है 0 है. सेकेंड पॉइंट, और व्हेन पीरियड कंटेन्स 0 वी डोंट नेम दैट पीरियड इन word form. So look at this number 21,000. So in ones period there is 0 digit is present because ones period covered ones, tens and 100, and in ones or tens and in 100 0 digit is present, and in the thousands period 21 1000s 1 is in present in thousands place and 2 is in 10,000s place. So 21 is in thousands period. So when the period contains 0 we don't name that period in word form. तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको इस तरीका से लिखेंगे 21,000
बिकॉज थाउजेंड्स पीरियड के एंड में और वंस पीरियड के स्टार्ट होने से पहले हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। लेकिन इसी को जब हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्योंकि वंस पीरियड में 0 है, हम इसको वर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सिर्फ हम थाउजेंड्स पीरियड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 21,000। सो 21,000 इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर को जब हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 21,000 लिखेंगे। थैंक यू।